हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और जिंदगी की अगर बात करें तो जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जी हाँ, और हमारे बीच आज एक ऐसी ही पर्सनालिटी दिखाने के समान होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राइटर, जर्नलिस्ट एंड चेयरपर्सन ऑफ ओम पुरी फाउंडेशन मिस नंदिता पुरी जी की। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड इवनिंग मैम। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत गर्मी है मगर फिर भी सब लोग को जी वही एक ही हाल है। एंड थैंक यू जी। फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आप थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया हम मेरे बारे में। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट मैम, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है और सच में आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो। एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैम ब्यूटिफुल। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? हाँ, काफी बार, 3-4 बार जी तो आए हैं। यू नो ऐसे लग रहे आई विल नॉट बी एबल टू go further, but then you think about it और आप अपने आप को हौसला देते हैं। You ask for power from the universe, from the Almighty, and you say we have to go on. You analyze the problem, go headlong into the problem, and get out of it. It's like a tunnel, and you come out in the open. तो ऐसे यस। काफी बार हुआ। एंड जी नॉट ओनली मी, हम सबको होता है। आपके लाइफ में भी ऐसे हो गया होगा। राइट मैम। बट वी ट्राई एंड वी डोंट गिव अप। आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स आर सच दैट एट द एंड ऑफ द डे इन वॉट एवर, जैसे भी आप कोई इफ यू सी अ beggar on the street or you see a big industrialist, we all face problems, and yet we manage to face our own demons, our own problems. हर का प्रॉब्लम बहुत मुश्किल होता है, जी जी। but we manage to get out of it. Yes, राइट I मैम। think एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जो आपकी जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में सुना है, आपके बारे में पढ़ा है। आप 10 इयर्स की थी, आपने अपने फादर को खोया और उसके जी। बाद जिस तरह से आपने काम किया है, रियली सैल्यूट टू यू मैम। थैंक यू। क्योंकि यस। यस, क्योंकि आपकी अगर एज की बात करें तो आप टूट जाती, लेकिन नहीं, आपने इतना अच्छा काम किया है। तो मैं आपको जो आपका बचपन है उसकी ओर ले जाना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी आप जर्नलिज्म में कैसे आए मैम? आपकी जो इंस्पिरेशन थी, कैसा इंटरेस्ट मतलब आपका जर्नलिज्म में बढ़ा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो मैं पैदाइश हुई कलकत्ता में। आई वाज बोर्न इन कलकत्ता। तो व्हेन आई वाज 11 आई लॉस्ट माय फादर एंड ही डाइड यंग। और
My mother, she was a central government employee, and all my inspiration comes from my father, no doubt, but my strength comes from my mother. हाँ, वो सिंगल वुमन थी, विडो थी एट अ वेरी अर्ली एज, फिर भी सुबह सुबह उठ के खाना वाना बना के घर का काम करके शी वुड गो टू ऑफिस. She would see to me it that I went to school, and I went to the good schools and the best colleges in Bengal, in Calcutta. And she saw to it nothing, even without my father, there would be no break in my education. She didn't shift Oh, me from schools and colleges. So I attended very good schools and colleges, the Loreto College and then Jadavpur University. And yes, and she worked all day in office, came back, and again did the housework. And seeing oh, her was the greatest inspiration. And I think she gave me all the strength and the power. And my father, when I was small, would read out biographies of great people. So he gave me the the thing to dream a lot. So I had big dreams and a very middle class background. And then at some point, when I was in the seventh grade, मुझे journalist, मुझे बहुत मन था to be a journalist, reporter बनना था. And so then I started working as a freelancer, or I started working for the major newspapers in Calcutta, the Telegraph जैसे, Statesman yes, जैसे, बहुत सारे. And जी, I was very, मतलब, I always wanted to do something different. And then one of my assignments, of course, was to interview Om Puri. He was already a name. He was a very well-known name. He was a great actor. तो कलकत्ता में इन लोग आए थे सिटी ऑफ जॉय फिल्म करने. Patrick जी, Swayze, Om Puri, Shabana Azmi ji, and the film was being directed by Roland Joffe. और उन्होंने already दो Oscar he had won, and Patrick Swayze had Ghost and Dirty Dancing. So I was just a young reporter who went to interview a stalwart like Om Puri, and बस बाकी history, as they say. ओह! वाओ! यस, हम इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैम आपने मिड डे एंड दैनिक भास्कर के साथ भी एक दशक तक काम किया है और फ़िल्मों के लिए भी आपने कॉलम लिखे हैं। उसके अलावा जी, आपने काफ़ी टीओआई के लिए भी काम किया है, द टेलीग्राफ के लिए काम किया है। वो एक्सपीरियंस कैसा था मैम? उसके बारे बहुत ही में अच्छा. हम ज जी, कलकत्ता में जो था टेलीग्राफ, स्टेट्समैन, फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इलस्ट्रेटेड वीकली, तो बहुत आई लर्नड ऑन द जॉब. I did not go to a journalism school because my subject was English literature, and then I went into journalism. And I was very lucky to have stalwarts, big names in the industry, and I learned under them. So I think वो जो learning on the field experience कुछ अलग ही होता है from classroom experience. Classroom experience helps a lot, no doubt, because you learn the basics. Theory आपको पता होता है, but राइट, हमें थ्योरी बाद में पता चला, क्योंकि पहले हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग था. Editors मुझे they would give me brief. I would go and then I would make a lot of mistakes because obviously मैंने कोई journalism school में नहीं गए, but I was always willing to learn, eyes ears all the time open. And that's how I वाओ! think from my mistakes I learned, and from a lot of hard work and experience. I would be working all 7 days of the week, you know, बहुत ओह! मतलब पापड़ बेले मैंने. So जी, I would do a lot of rough, on the road journalism, literally would be there. And that's how I learned. And then, of course, मैं जब बॉम्बे आए तो फिर वो थोड़ा कॉलम्स करने आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माय कॉलम्स. बट फिर माय सन वाज बॉर्न, सो 2-3 साल आई टुक अ ब्रेक. उसके बाद 2000 से टिल 2009-10 आई डिड अ वीकली कॉलम मिड डे के लिए ऑन सिनेमा कॉल पॉटपोरी. एंड देन एक साइमल्टेनियसली दैनिक भास्कर के लिए भी आई वाज राइटिंग.
um, for their magazine Our Zindagi. So that went on for 5 years. Midday column went on for 9 years. So continuously I was working. Every week I had a column, every month I had columns. And I enjoyed it. Oh, Plus wow. बाकी newspapers भी, they were there. And Yes. एक चीज था क्या, I didn't have to really work after I got married. But after a few years, Omji told me that you better start writing. Don't just sit at home and, you, if you are good at something, if you have a talent, please nurture it, nourish it, and continue with it. Yes, yes. Don't just bet ke ye. So at that time I couldn't travel much, so I couldn't take up a full-time newspaper job. But doing columns itself was a full-time job, you know. So always had to keep your ears and eyes open, कहीं भी गए, कुछ भी सुन रहे, जी, प्लस आपका एक खुद का रीडिंग, आपका खुद का नॉलेज, आपका खुद का जो भी यू गैदर, सो वो सब कुल मिला के कॉलम्स वेंट ऑन. सो आई डिडंट रियली जी, सिट आइडल. और एक चीज अच्छा था, क्योंकि बीइंग अ राइटर एंड अ जर्नलिस्ट, I became a columnist somehow from a newspaper reporter. The job I loved the most, being on the field, on field reporting. But I, at the end of the day, I said, "ठीक है, वो नहीं होगा." But I enjoyed. So it was खैर easier for me. अगर मैं, जी. suppose I wanted to be an actor, or I had some other job, bank job, then probably I couldn't have pursued it. You know, so Yes, ये yes. became easier also in a way, because you read a lot, you saw a lot, you heard a lot, you watched a lot, or up, you could use that knowledge for writing. So I would also say I'm lucky in a way, you know, because Yes. uh, बचपन से writing मेरे passion, it was my passion, जी. and I'm one of the lucky few who could turn my passion into a profession. So in a way, I say I'm blessed for that. यस, और मैम मैं जानना चाहूँगी, आफ्टर मैरिज आपके माइंड में ये नहीं आया कि अगर ओमपुरी जी की बात करें तो वो एक इंस्टीट्यूशन थे। तो जी. आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि मुझे एक्टिंग में जाना चाहिए? Luckily no. क्योंकि क्योंकि आपके सामने uh, इंस्टीट्यूशन था। यस। वो तो है, but the institution was a very tough institution. एक तो he was a professionally qualified actor. वो बचपन से he did theatre पंजाब में. He was born in Ambala. So then he went to Patiala to his nanki, and over there he worked in the theatre group with Harpal Tiwana Saab of Punjab Kala Manch. Then फिर उन्होंने NSD गए. 3 साल he studied in NSD. फिर 2 साल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इन पुणे. तो 5 साल का एक्सपीरियंस फिल्म working, learning, assisting. He was an institution himself, as you rightly said. तो उनके उनके जी। पास जाके अगर मैं बोलूँ आई वांट टू एक्ट, ये तो लकीली यस। मेरे एक्टिंग का शौक नहीं था, वेरी लकीली. तो दैट ऑल्सो ओमजी वॉज वेरी हैप्पी. ही सेड, अरे यार, एनीबडी आई मीट, एक्टर, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, ये वो फलाना ढिमकाना. He was quite irritable at that point. So I had no interest in acting. I loved cinema. I watched a lot of films. I, interacted with actors and all. I saw my husband from very close quarters. Kaise he used to learn his lines, how he used to prepare. I used to go for shootings. Udhar bhi, I used to see his dedication. All that hai. But somehow मुझे कभी, I never had the चस्का. My last experience in acting was college plays, उधर तक और बस. But I didn't want to be a professional actor, and I think Omji was very happy about it, क्योंकि अब, he didn't like that two people from the same house in the same profession is very tough. यस, अगर यस। दो डॉक्टर्स है एक घर में, तो बहुत ही मुश्किल होता है बच्चे लोग के लिए, so राइट similarly मैम। actors also have big, so but yes, recently, just last year, I did a film called Yes Papa, directed by Saif Haider Hassan. So I'm playing a small cameo. I mean, not a cameo, I would say a small role. I play Anant Mahadevan ji's wife in the film.
So it's a very interesting film, and I had no interest in acting, but Saif, the director, said, "Chalo, chalo, ab kar loge." So, abhi my son keeps saying, "Agar Baba hota to he would have been really zapped." He said, "Kabhi you never wanted to be an actor, and now abhi acting mein." But that is a one-off thing. जिंदगी में सब कोशिश जी, करना चाहिए, I think. यस, यस, राइट मैम। और हम सर के बारे में और जानना चाहेंगे क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया वो एक इंस्टीट्यूशन थे और इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका अहम योगदान है और उन्होंने हॉलीवुड जी, फ़िल्मों में भी मोर देन 250 फ़िल्मों में उन्होंने काम किया, तो वो कैसे नेचर के थे? और वो जो एक्टिंग के बारे में कुछ मेमोरीज़ आपकी उनके साथ, वो हम जानना चाहेंगे मैम। बहुत और सारे हमारे हैं। लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि आपने एक बुक भी लिखी है अनलाइकली हीरो ओमपुरी। Wait, wait, okay, जस्ट वन okay. सेक मैम, मैं आपको सोलो करती हूँ। यस प्लीज। ओह So वाह, this is वाह, यस, this is my book, Unlikely Hero Om Puri. तो ये बुक वाह, में आई टॉक अबाउट ओम जीज अर्ली चाइल्डहुड, बचपन, जो कि जी, पैदाइश हुआ था अम्बाला, और हिज चाइल्डहुड वाज स्पेंट इन पटियाला, और जी, वहाँ से इनका जर्नी, उनकी जर्नी टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, देन फिल्म इंस्टीट्यूट इन पुणे, एंड फाइनली बॉम्बे. सो जी, पंजाब वाज हिज जन्मभूमि, बट Maharashtra was his Karam Bhumi, Bombay was his Karam Bhumi. यस, So, यस, so everything is written in the book. It's a huge life. It's an जी, amazing life. Where he started from the age of 4, because he came from a very poor background. तो उन्होंने टी स्टॉल में काम करने, he was working in a tea stall as a 4-year old. बर्तन ओह, घिसते थे, yes. And he never made a big hoo-ha about it, but he started washing utensils, bartan, in a tea stall as a 4-year old, and then he gave tuitions, he worked in the farm, and then slowly, 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 even when he came to Bombay from FTII, immediately to kaam nahi mila. So he used to teach in Roshan Taneja Saab's actor studio. His first batch of students were Anil Kapoor and Mazhar Khan and Madan Jain, whole lot of them, Surinder Pal. So Gulshan Grover, they were all his first batch of students. He used to teach speech and movement. फिर वहाँ से, he started doing small roles. फिर अर्ध सत्य किया, और अर्ध सत्य से, as he would say, उनका लॉटरी लग गया. तो वहाँ से शुरू हुआ, and then after that there was no looking back. फिर he did a small role in Gandhi, Richard Attenborough's Gandhi. That was his first brush with Hollywood, but that was a cameo, एक ही scene with Sir Ben जी, Kingsley. But after that, he started, big major role was City of Joy, पैट्रिक स्वेजी के साथ, जो जहां हम मिले उनसे. उसके बाद ही वर्क विद जैक निकलसन, विद टॉम हैंक्स, विद जूलिया रॉबर्ट्स, with Michael Douglas, and his last film was with the Academy Award. All these actors are Academy Oscar-winning actors. The last was with Helen Mirren in 100-Foot Journey in 2014, and so this whole journey is amazing, and I've been lucky to have found how he worked at close quarters घर में भी और उनके साथ shootings में. Got to see how he worked, how the other co-stars worked, whether it was Tom Hanks or Amitabh Bachchan ji or everyone. We literally, he worked with the best in India and internationally, from Satyajit Ray to, you know, Mike Nichols. He, he worked with literally everyone, Shyam Benegal, Govind Nihalani. So it is a जी, long journey, and मैं बहुत fortunate जो I was part of this journey. I was able to witness from the sides, and then I was able to put it down in Unlikely Hero Om Puri. वाह, So it's by Rowley Books, published by Rowley Books. So
वाओ That मैम, is, ग्रेट। और हम भी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। और मैम, मैं जानना चाहूंगी ओमपुरी सर के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थी। जी यस। और उनका जो मिशन था वो किसानों की हेल्प करना। जी। और आप, यस, तो तो उसके बारे में ओ भी हम जानना चाहेंगे मैम। जी, तो ओम जी ऑलवेज quietly he used to help people. He never called them poor. हम भी कभी poor नहीं बोलते किसी को. हाँ, we call them less privileged. You know, because poor हम भी poor हो सकते किसी और field में ना. तो less privileged, so underprivileged. So he had two wishes. One was किसानों के लिए. He would say किसान हमारा is the backbone of our nation. He came from a farming background. He's saying अगर हम किसानों को नहीं मदद करें, what is happening? All the farmers' children उन लोग शहर में चले आते हैं और इधर कुछ ड्राइवर के काम, कुछ इधर उधर भटकते भटकते the our backbone is weakened. So he said, always help out the poor farmers, help, we should help, and see to it the children remain, they study further in agricultural universities and bring back the knowledge to the farm. So that, like Omji's family in Patiala, all his nephews, they are very qualified. They are, management degree holders, they are lawyers by profession. They hold law degrees, but they're very proud to be farmers because first thing they say we are farmers and then we are baki sab, So that is what every farmer in the country should be. So when Omji passed away in 2017, that year at the Cannes Film Festival, we launched the Om Puri Foundation. And the Om Puri Foundation had two uh, goals. One was to unka jo 250 films, some of them amazing work, Shyam Benegal's Discovery of India and whole lot of stuff. So to carry his legacy forward by showing these films in festivals, in schools, colleges, and all over, taking his, carry his legacy. The other was to carry his philosophy forward. Philosophy was by helping out the less privileged. So we started ओह the, वाह। जैसे we started the Om Puri scholarship in FTI and the Om Puri fellowship post NSD. हम लोग ओम पुरी किसान अवार्ड और ओम पुरी कारीगर अवार्ड भी इंट्रोड्यूस किया. तो वाह। उसमें है क्या, या दिस इज फॉर farmers children, to give them a scholarship, Om Puri Kisan Award, so that they study further and come back and help their fathers or mothers. और दूसरे है, he said, जैसे farmers are our backbones, the weavers, the craftsmen, the artisans are our, will make the nation Atmanirbhar. Long before this word became fashionable. So we ओह introduced वाह। in 2017 the Om Puri Karigar Award. So for weavers, craftsmen, for their children, and even during the, और क्या है, हम we started with this, but ये pandemic के time में I realized now people are जी। all people, the students were studying online. So I reached out to people who needed money most. So I started with the dabba walas of Bombay because they were the daily wages, और उनका जो यस। work stopped because offices closed and they had nothing. So I started by helping out the dabba walas. Then we helped out the farmers in some parts of Maharashtra. Then we helped out the junior artists because actors and stars have their money in place. They can manage. Even if they don't have to work for 15, 20 years, they are okay. But the junior artists are not. They are also daily wages. So we यस यस। helped them out. Then we reached out to the weavers. So we tied up with various other NGOs like the Dastakars and with the weavers. And we reached out to individual weavers, individual farmers. And then finally, we also helped the Amphan victim, the cyclone which affected West Bengal that time, Amphan, at the Sundarbans. So we tied up with the Mukti Foundation and we, the Om Puri Foundation helped these people because at that time, these were the people we needed to reach out to, because scholarships and fellowships were not
of any Yes. avail then. तो फिलहाल हम लोग directly उन लोग के accounts में we put in money for ration. We did not go either udhar, just donating. We saw to it each of them got directly into their account so that they could manage for 2-3 months. That was our idea, and we reached out to more than 50,000 people at that Oh, point in time. So that was, there were lots of people, amazing work people did, and people who had no money, not much income. सब लोग जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं था उन लोग they were helping other people, and that was very heartwarming to see that. So we did in a small way, in our little way, because everyone did little by little, and that's how we were able to come out of this. And now we will go back to again our offline events and stuff like that, and help see what we can do. वाओ, ग्रेट मैम। So और the सच में idea बहुत was, ही अच्छा काम किया। नो मैम, क्योंकि आपको ही मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। जी हैट्स थैंक यू, ऑफ बट मैम। इतना तो कर सकते हैं ना, हम लोग थोड़ा प्रिविलेज्ड है। तो अगर हम ऐसे घर में बैठ के सिर्फ खाना ही पकाए और टीवी देखे और नेटफ्लिक्स देखे, यस। तो क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? फिर वो ओमपुरी फाउंडेशन का जो मेन राइट। गोल है, जी। टू टेक हिज फिलोसफी, तो वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो थोड़ा तो हमें यस, तो यस। करना चाहिए, सबको जी। मदद करना चाहिए। जी। And I was very राइट मैम। lucky to have very good team members who helped me, you know, to help me do reach out to the people. ग्रेट मैम। और मैम, आपकी 2005 में एक जो बुक आई थी 9 on 9। हाँ जी। यस, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ओ आई बुक का कॉपी तो इधर नहीं है यस। anyway. So but 9 on 9 is it's been so many years, it's still doing very well. वो one of the stories साहित्य अकेडमी एंथोलॉजी में है ऑफ इंडियन राइटर्स, और एक स्टोरी है डेनमार्क यूनिवर्सिटी का करिकुलम में है, इट्स कॉल्ड भाभी जी। So it's about 9 different women, urban Indian women, different strata of society, lower middle class, elite class. And the basically it's how women live, how they fight, how they weave their way around. So that is 9 short stories, planning to make it into a web series. One story at Jenny's has been turned into a script. uh, यस। तो तो देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। जी। और 9 on 9 आपकी is my जो अभी favorite book. It's जेनिफर। यस। Jennifer, yes. जेनिफर। यस, यस। So Jennifer is Jennifer is a book on child trafficking and intercountry adoption. It is एडॉप्शन। based on a यस, true जानना story. चाहेंगे। यस, यस। जी, तो मैंने 5 साल काम की on Jennifer. जी। Not only on Jennifer's life, how she was trafficked out of India, abused by her adoptive fathers, then went into drugs and a whole lot of stuff, then was deported back to India. यहाँ पे भी she was onto drugs. तो ये I worked not only just on Jennifer alone. ये जेनिफर के थ्रू में I am bringing out how intercountry adoption and child trafficking is, about the whole system, the very rotten system of child trafficking. So I worked on it for 5 years. Abhi uh, it got published during the lockdown. तो जितना भी हम book readings किया सब online. I couldn't go out for any, जी। but then what happened? ये बीच में लॉकडाउन के बीच में I wrote the screenplay of Jennifer. So right now we have signed it with Priyanka Chopra's Purple Pebble Pictures. So ओह वाह! we will be doing a collaborative. That's Purple Pebble Pictures and Om Puri Films. So let's see what happens ahead on Jennifer. यस, Because this is जो a भी very, होगा अच्छा ही very होगा, strong, बट यस। ये बहुत strong subject है. हम लोग जी। we don't know that intercountry adoption, हम बोलते हैं चलो बच्चे को अमेरिका भेजते हैं adoption के लिए,
बट आउट ऑफ 100 ना 10 बच्चे एक्चुअल अडॉप्टिव फैमिलीज में जाते हैं, पहुंचते हैं। बाकी 90 राइट। बच्चे तो इधर उधर भटकते रहते हैं, pedophilia, यस। sex trafficking, all that. राइट। So this is a book through one story, one life. We bring out the whole system. वाह, ग्रेट मैम। और हम वेट करेंगे क्योंकि आप जी बहुत ही अच्छी बिल्कुल, स्टोरी लेके आई। बिल्कुल, यस, और बहुत बिल्कुल। ही अच्छा मैसेज है। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, आजकल ऐसा होता है। जी, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मैम। yes, और thank मैम you. इसके अलावा आप टीवी और फिल्मों के लिए भी आप लिखती हो? जी, एक फिल्म लिखी मेरे दिल लेके देखो, बहुत पहले, वो पूनम सिन्हा जी ने प्रोड्यूस किया, अर्चना पूरन जी, जैकी श्रॉफ इन लोग किरदार निभाए। सो वो दो 2006 में मेरे ख्याल में। और बस थोड़ा बहुत इधर उधर शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स लिखती हूँ, और अभी जी। विल यस, कंटिन्यू और माय नेक्स्ट फिल्म प्रोजेक्ट। कितना मुश्किल होता है मैम फिल्म लिखना? सी हमारा, माय स्टाइल इज आई राइट द स्टोरी फर्स्ट। जैसे मेरे शॉर्ट ओके। स्टोरी हो या जेनिफर हो फुल लेंथ बुक, तो वहां से आई ऑलरेडी हैव द फ्रेमवर्क। तो मे आई डोंट थिंक आई हैव अ वेरी टफ टाइम from writing, from book writing to script writing. Also I enjoy script writing. In fact Jennifer जो कहानी है, ये पहले मैंने, I wrote a script form, then I wrote my book form, and then I redrafted the script. तो I sometimes I think a lot visually, तो मैंने बहुत visually सोचती हूँ, तो I can write scripts better sometimes than books. ग्रेट मैम। और मैम हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। अरिज अली खान जी जुड़े हैं जो कि बहुत ही जी, अच्छी गजल सिंगर है, और प्रीतम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। सुपरस्टार विश जोश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी है जो कि बहुत ही अच्छी कवित्री है। कृष्णा डोगरा जी जी, हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो प्रोफाइल एंड यूट्यूब में जुड़े हैं। उन सभी को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक और यू। मैम एक अच्छा राइटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अच्छा राइटर बनने के लिए सबसे पहले रीड, रीड अ लॉट, राइट रेगुलरली, प्रैक्टिस करते रहिए। आप कुछ भी लिखो बट लिखते रहो, बट मोर देन दैट रीड अ लॉट। लाइक कभी पीपल टेल मी व्हाट आर यू राइटिंग नाउ, आई सेड आई एम नॉट राइटिंग, I'm reading in order to write better. So this, oh, you're reading. I said, reading is as important. It's like a gym. Like actor के लिए gym जाना जरूरी है, writer के लिए read करना बहुत ही जरूरी है. So I जी। read well, observe well, note everything, good power of observation, and practice writing. Keep practicing. And as you read and as you practice, you will automatically improve your writing. यस यस, राइट मैम। एंड थैंक यू सो मच मैम। और इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज है मैम आपकी, और क्या क्या करते हो आप? Oh, what I like doing is my son and everyone complains cleaning the house. I love to clean the house. So Hamesha, if I'm sitting idle, I start cleaning. That's one thing. And the second thing, Om ji बहुत अच्छा cook था. He was a very good cook. And I think world का best parathas he made. हर किस्म का पराठा. But I could not cook, and I still can't make a roti. But during the lockdown, I have learned some very good dishes, and people like tell me, "Oh wow, you really cook well, especially salads and mutton and fish." And I'm from Bengal, so I never cooked fish, or Omji loved fish. But now during the lockdown, I learned to cook fish. So I feel bad that I couldn't feed him fish. So yes, I've learned to cook. I enjoy cooking. ओह, वाओ, ग्रेट मैम। यस, क्योंकि लॉकडाउन तब में तो मतलब बहुत कुछ सीखा भी everyone है became a और सिखाया master भी। chef, huh? यस यस। Everyone. But राइट it's मैम। good. Omji, whenever वो बाहर, suppose he was shooting abroad, तो वो मसाला सब इधर से लेके जाते थे.
और ओह शूटिंग करके रात को आके he would make himself a drink and he would cook. I said यार पूरा मतलब 13-14 घंटा आप ट्रैवल करके शूटिंग करके why are you cooking? So he said cooking is de-stressing. It's a stress buster. तो पहले I never used to understand से पागल है हाँ but now I realize when I'm stressed out otherwise also I enjoy cooking and I maybe later in life I learned that cooking is a stress buster. ओह और क्या क्या हॉबीज थी उनकी ओमपुरी सर की? He loved to cook बहुत he enjoyed cooking. He enjoyed plants. You know, we have a farmhouse in Khandala. So वहाँ पे he used to do gardening. He loved, you know, talking to plants also. And he liked reading a bit. He enjoyed listening to music, but he didn't enjoy watching films. He never even watched some of his own films because ओह institute में and festivals में he had seen इतनी सारी films देख लिया that after that he rarely went out and saw a film. ओह Neither at home nor in the theater. ओह I'm a film buff. I always have been watching films for the longest time. और उनकी फेवरेट एक्टर कौन थे ओमपुरी जी की? मुश्किल है. He liked Jack Nicholson very much. He liked Balraj Sani Saab very much. He was a big fan of Balrajji and he liked Amit ji very much, Amitabh Bachchan. And among the younger lot, he loved Hrithik Roshan. He used to say he's a very, very hardworking and talented actor. ओह ग्रेट मैम एंड थैंक यू सो मच मैम। और मैम Thank you so जाते much. जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, राइटिंग में आना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगी आप? So I will say, Omji also used to say, acting, direction, your performing arts like music, dance, writing, these are very difficult professions to pursue. So always have a backup. You know, Omji had a graduation backup. He said I could get a job in a government office or something. So अगर आपका acting का दुकान नहीं लगे और या writing का दुकान, as a writer, you can have a backup as a journalist, as a magazine editor, as a copywriter, anything related to writing. So till the time you make it as a fiction, non-fiction writer, you have a backup. You have a steady job. I was a journalist before I became a writer, author. Similarly, as an actor, you should have one qualification, say cinematography, editing, sound, something which will in the same field, but till you pursue direction or acting professionally, till you can have a backup. That is all I would say, and be sincere in your art. अगर आपको राइटर बनना है, एक्टर बनना है, एकदम मन लगा के रखो. Be passionate, be sincere, don't give up. Even if you have to do your backup job for 3-4 years, do it. But continue with your passion, because one day the passion will turn into a profession. Right. Yes, and thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving Thank me you, your and valuable time. congratulations to you for a beautiful show, and keep the good work going. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was a great experience with you. Thank you. Likewise. Thank you so much, ma'am. Bye-bye. Take care. Bye. थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप भी कोशिश कीजिए। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों